Good morning, dear students. This is your science class. Open up chapter number 6. This is a new chapter of chemistry which we are going to start today. The name of the chapter is Physical and Chemical Changes. This chapter is all about the changes around us. You know, students, there are a number of changes in our life from childhood to adulthood, right? The growing of your hairs, the food we eat, and the burning of wood, melting of ice. These all are the changes that are common in our daily life, right now? Now students, in this chapter, we will study about the categories of these changes. Basically, there are two types of changes that happens around us. First is physical change and second is the chemical change. Now, what is the difference between physical and chemical changes? What are these kind of changes? So, let's start. First one, we will study about physical change. What is the kind of physical change? The definition is very simple. Read it. A change in which only the physical properties of a substance gets changed and no new substance is formed is called a physical change. Means to say a kind of चेंज, एक ऐसा चेंज जिसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर या फिर उसकी स्टेट. वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेंसिल. This pencil is made up of wood. It is having a black color graphite inside it and it is hard. It is not soft, na? It is hard. So these all are the, and we can also say that its color is silver and black. So these all are the physical properties. So a kind of change in which there is a change only in the physical properties, right? Gets changed and no new substance is formed. Such changes are known as physical changes. Now what are the examples? The examples are simple. Firstly, take an example of this thing. Melting of ice, है ना? Melting of ice and freezing of water. This is a physical change because ice को melt करके क्या बन जाता है? Water बन जाता है and water को वापस से freeze करके ice बन जाती है. कोई भी new substance नहीं बनता, है ना? And state में क्या change होता है? State change हो जाती है from solid to liquid and from again liquid to solid. Right now, so such changes in which only the physical properties change, such changes are known as physical changes. For example, cutting of paper, another kind of physical change. हम पेपर को कट करते हैं, क्या पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं अब पेपर की बजाय किसी फैब्रिक का बन गया है? ऐसा तो नहीं कह सकते ना. इट मीन्स टू से कि हमने सिर्फ कटिंग ऑफ पेपर में सिर्फ उसका हो सकता है हमने शेप चेंज कर दिया है, बट द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, राइट ना. दैट इज वाई कटिंग ऑफ पेपर इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज. I hope the meaning of physical change is clear to you. Now come to the next page. Now these are some of the examples of physical change. First is stretching of rubber band, that is grinding of substance, expansion and contraction of substances, melting of wax, formation of clouds, magnetization of piece of iron, hammering of metals and stretching of metals to form wires. In all these changes, no new substances takes place. That is why these all are the physical changes. I hope the examples are clear to you. Now students, we will read about the characteristics. Means to say characteristics and some of the physical properties of physical characteristics. Characteristics means properties of physical changes. Means जो important points हैं, जो उसमें constant रहते हैं. Firstly, no new substances takes place. Secondly, a physical change is generally reversible. Physical changes कैसे होते हैं? Reversible. जैसे आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है ना, elongated हो जाता है. बट as soon as you released, जब जैसे ही आप रबर बैंड को छोड़ते हैं, रबर बैंड वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. इट मीन्स टू से फिजिकल चेंजेस में जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. नेक्स्ट वन, नो ओवरऑल एनर्जी टेक्स प्लेस. कोई एनर्जी गेन या लॉस नहीं होता. नंबर 4,
chemical composition of a substance remains the same. I will explain you the meaning of chemical composition later on. So chemical composition of a substance remains same, like in case of paper. After cutting, the papers remain the same as a paper. So its chemical properties does not change. That is why these all are the physical changes, right? Now come to the definition of another one, that is the chemical change. What is the chemical change? These are just the opposites of physical changes. ठीक है, फिजिकल चेंजेस में आपके कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं होते हैं ना, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना. लाइक मेकिंग ऑफ टी. टी को आप एग्जाम्पल ले सकते हो. टी जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, मिल्क ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, टी लीव्स ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है. दैट इज कॉल्ड टी, राइट ना. So in the same way we can say that in chemical changes mainly new substances takes place. And another one, जब हम tea making करते हैं, whenever we make a tea, we usually use a gas stove use करते हैं. एनर्जी देनी पड़ती है ना, वरना तो टी नहीं बन पाएगी. That is why energy change takes place, है ना. So read the definition. A change in which new substances with entirely different chemical composition and properties from the original substance is formed is called a chemical change. It is very simple. Take an example of this activity. What happens in this activity, students? We have taken a test tube. हमने test tube लिया है, and then we have a little solution of copper sulfate. Copper sulfate बिल्कुल blue color का होता है, इसीलिए इसको blue vitriol भी कहा जाता है. That is why हमने इसमें क्या किया है, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लिया, एंड आफ्टर दैट वी डिप्ड अ आयरन नेल इनसाइड इट. आफ्टर 30 minutes और आफ्टर 1 hour व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट दिस ब्लू कलर फेड्स अवे. वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. इफ आई गेट अ चांस देन आई विल श्योरली डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू. सो क्या हो जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में जो आपका ब्लू कलर होगा वो ग्रीन में चेंज होने लगेगा. वाई? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट एंड आयरन में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है. कॉपर सल्फेट एंड आयरन मिलके क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फेट, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर का होता है वो, दैट इज वाई इसका कलर हमें कैसा दिखता है, ग्रीन कलर. ओके, एंड प्लस वन थिंग मोर, जो आयरन नेल जो आपका शुरू में क्लीन था, अब वो कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स नजर आएंगे. दीज आर द डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर. ठीक है, इन योर हायर क्लासेस अगेन यू विल रीड दिस एक्टिविटी विद सम ऑफ द वेरिएशंस लिटिल बिट, एंड आप फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, आपको रिएक्शन भी समझाई जाएगी, क्या नाम होता है इस रिएक्शन का. ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. But here in this section I'm going to make you understand that this is a kind of chemical change, because ये कलर जो ब्लू आपका चेंज हुआ है, अब ये वापस से आप ब्लू में चेंज नहीं कर सकते. प्लस आपके न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. पहले तो कोई ब्राउन डिपॉजिट्स नहीं थे, अब आपका ब्राउन डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं. इट मीन्स टू से दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, इट कैन नॉट बी bring back, it is not reversible. These changes are irreversible. That is why it is known as chemical change. Okay, you can read the activity again at your home. Now come to the next activity, activity number 4. Now in this activity it is another example of a chemical change. Now see, in this activity students, what we have done, we have brought a magnesium ribbon. हम magnesium ribbon लेते हैं about 10 centimeter, and firstly उसे सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं, बिकॉज उसके ऊपर क्या डिपॉजिट रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट रहती है. दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी टू क्लीन दैट पेपर, अदरवाइज रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. सो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, व्हाट हैपन्स, ब्राइट लाइट विल बी फॉर्म्ड. The formation of white light takes place, and along with that what happens, जब आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है, then ash will be produced.
है ना. That ash is known as magnesium oxide, जिसको हम white powder भी बोलते हैं. Okay, so burning of magnesium ribbon will gives us white light, dazzling white light along with magnesium oxide powder. Okay, so this is a kind of chemical change because अब जो अपना magnesium ribbon burn हो चुका है, it cannot be bring back. आप उसको वापस से नहीं ला सकते. That is why burning of magnesium is considered as a chemical change. Okay, now the reactions are written here. We will also discuss these reactions in your higher classes. 2 Mg plus reacts with oxygen, it will give 2 MgO, that is magnesium oxide. I hope the thing is clear to you. The major concept which I was trying to make you understand is clear, right? Now students, in both the cases, in the case of copper sulfate here and in case of burning of magnesium ribbon, what is the common thing? Both of these changes are chemical changes. दोनों में ही new substances बन रहे हैं, है ना. That is why means to say हम ये कह सकते हैं कि एक chemical reaction हो रही है. ठीक है. Now read this stanza. In the above mentioned activities, new substances with different chemical properties are formed. So all of these are chemical changes, and a chemical change is also known as chemical reaction. Okay. So the definition is clear to you. The process by which one or two substances that transformed into new substances, कोई भी particular original substances से कुछ new substances बनते हैं, है ना, by a certain reaction, that is known as a chemical reaction. Now we will discuss some of the more example of chemical reactions, chemical changes also. That is explosion of firecrackers, है ना. जब हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी होती है, साउंड भी होती है एंड हार्मफुल गैसेस भी होती हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस. नाउ कम टू अनदर पेज. आफ्टर द कटिंग ऑफ फूड, फ्रूट्स अगर हम वेजिटेबल्स अपने फूड में रखते हैं, देन व्हाट हैपन्स, आफ्टर सम टाइम दे बिकम्स ब्राउन, दे टर्न्स इनटू ब्राउन कलर ड्यू टू द डिपॉजिट्स ऑफ another kind of layer that reacts with oxygen. That is why change in color has been observed. This is a chemical change. Okay, now the next one is spoiling of food, and digestion of food is also a chemical change because वो energy release करता है and new substances formed होते हैं, juices बनते हैं, plus we cannot bring it back. हम अपने food को वापस नहीं ला सकते. That is why digestion is also a chemical change. Now you can read this paragraph to have a look at some more examples. Like one of the example which I am seeing here is the burning of incense stick. अगरबत्ती सब यूज करते हैं, पूजाज में यूज करते हैं ना. What happens जब हम अगरबत्ती को बर्न करते हैं तो अगरबत्ती क्या होती रहती है, डिक्रीज करती है ना साइज में, छोटी 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 हो जाती है, एंड प्लस स्मेल रिलीज करती है, स्वीट स्मेल आती है, एंड प्लस स्मोक प्रोड्यूस करती है, और साथ साथ क्या होता है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या, ऐश, है ना. ऐश भी तो प्रोड्यूस करती है. दैट इज वाई बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नाउ इन द सेम वे we have discussed the characteristics of physical changes here. Now these are the characteristics of chemical changes. See, in chemical changes new substances are formed. Chemical changes are generally permanent, they cannot be reversed back, आप उनको वापस नहीं ला सकते. And during a chemical change energy transformation takes place, like digestion of food, making of tea, है ना. या तो एनर्जी हमें मिल रही होती है या हमारे पास से एनर्जी जा रही होती है. दीज आर द टू चेंजेस. एंड देन अ केमिकल चेंज मे ऑल्सो अकम्पनी चेंज इन स्मेल एंड कलर, जो हमने अभी डिस्कस किया है. कॉपर सल्फेट में कलर चेंज हो रहा था, है ना. और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में लाइट प्रोड्यूस हो रही थी. फायर क्रैकर्स में भी लाइट प्रोड्यूस हुई है. बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक में स्मेल प्रोड्यूस हो रही है. सो मीन्स इफ वी पे अटेंशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस देन वी कैन कैटेगराइज each change as a physical change and a chemical change, right? So students, this table is all about the difference between physical and chemical changes. Read it at your home, try to do the MCQ section here, and if there is any doubt up to this
discussion that we have discussed, you can ask me. Okay, tomorrow we will continue with this chapter, and I hope each and everything is clear to you that I have told. Thank you for watching. Have a nice day.